Dear student, good evening. How are you? You are all very fine. And in this video, we are about to study effect on the size of the image. Image की size पर क्या effect होगा? When object brought closer to the pole. जब object को pole के closer लेकर आते हैं, वो भी किस mirror में? Convex mirror में. Okay, let's see this. This is convex mirror. And this is principal axis with pole, focus, center of curvature. Okay, an object placed here, A, B, and a ray travels parallel to principal axis. Okay, after reflection appears to come from focus. From focus. Let's draw once again. हमेशा पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि once एक ही बार में बेहतर बन जाए. Okay, another ray passes through this is C, another ray incident perpendicular normally at 90 degree retraces on its path. Okay beta, so both rays meets at this point I. So I is the image of B and take a perpendicular I dash. I dash is total image of the AB. B का इमेज I है बेटा. A का इमेज कौन है? I dash है. या फिर आप इसको I कहते हैं, इसको I dash कहते हैं. ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. AB I dash. Yes बेटा. So AB is the object and I dash is the image. Everything you know very well. Image is what? Erect, small, virtual between P and F, but when objects get closer, अगर ऑब्जेक्ट को यहां ले आए closer, pass, same object AB. Okay, and in this position I want to know, what will happen. I want to know अगर अब इमेज बने इसकी वही ऑब्जेक्ट है लेकिन जो क्लोजर है किसकी? मिरर की. सो क्या कंडीशन होगी इमेज की? लेट्स another ray perpendicular. Once again I will draw. We have to meet this beta. How can I meet this? Okay. Now meet this. This is I dash. Yeah. Okay, you can understood. Once again another ray perpendicular normally incident at this point, so reflect back on its path. Okay, and appears to come from point C, and this is the position of image I of point B. इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट के बेटा B की इमेज
ये है, I है, and take a perpendicular, and if this is set I double dash, no problem, this is I dash and this is I double dash, okay, and this is I. So इस पोजीशन में AB की जो इमेज बनी बेटा वो ये है I dash, and you can understood what that always image is virtual erect between P and F, but this image is greater than to this image. What you will understood, as well as objects coming closer to the मिरर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर के क्लोजर लेकर आते हैं, जो इमेज होती है अगर आप देखें बेटा तो साइज में बड़ी होती जा रही है, एनलार्ज होती जा रही है, एंड वो पोल के पास आ रही है. मीन टू से जब ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग टू पोल, देन इमेज मूविंग आल्सो टू पोल, तो इमेज भी पोल की ओर आ रही है. ओके, और साइज एनलार्ज होती जा रही है. ओके बेटा, आई थिंक यू आर ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय, टेक केयर.